इस्तेमाल करें। पाइथन हमेशा आपको एक बात ये बताएगी, प्रोग्राम इट द वे आई टेल यू टू प्रोग्राम, या मतलब आई पे रिगार्ड टू द एल्गोरिथम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी बट स्टिल डू इट द पाइथोनिक वे, राइट? एंड व्हाट इज पाइथोनिक वे ऑफ प्रोग्रामिंग? यूज built-ins as much as possible. Use built-ins as much as possible, because the implementations that Python has done for various things in itself are quite efficient. Don't try to oversmart those things. Probably, most likely you won't be able to do that because वो एक larger community ने काफ़ी efficient अंदाज में पहले से implement कर रखी है. Okay. So, अब अगर हम ग्रेडियंट डिसेंट की तरफ जाएं तो ग्रेडियंट डिसेंट में हमें डॉट प्रोडक्ट्स तो निकालने ही होते हैं जब हमने आउटपुट्स निकालनी है, और उसके बाद फिर हम जब डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं तो हमने उनको बैक प्रोपेगेट भी करना होता है, यानी हमने w's की वैल्यूज को और b की वैल्यू को अपडेट भी करना होता है, राइट? सो फॉर एग्जांपल अब आप यूँ कहें कि लाइक फॉरवर्ड जाते हुए तो हम w's और x का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है? दूसरा काम हमें इसमें उसके अंदर क्या करना है, w's की वैल्यूज को अपडेट करना है। w's की वैल्यूज कैसे अपडेट होंगी? हम हर w में से उसके रिस्पेक्टिव उसके जो कॉस्ट फंक्शन है उसके उस वेट के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव को माइनस कर रहे होंगे, राइट? सो व्हाट वी डू हियर इज वी अगेन हैव अ वेक्टर w's ऑफ ऑल द वेट्स। फर्ज करें हमारे पास 16 वेट्स हैं, ठीक है? फिलहाल हम b को यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? बट लाइक b कैन आल्सो बी लाइक एडेड एज अ सेपरेट वेरिएबल। ओके, फिर हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं। फर्ज करें हमने तमाम जो लॉस फंक्शन था, कॉस्ट फंक्शन था हमारा, हमने उसके डेरिवेटिव्स भी विद रिस्पेक्ट टू ऑल द वेट्स कैलकुलेट किए हुए, राइट? सो द डेरिवेटिव ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू w1 इज कॉल्ड d1 से, विद रिस्पेक्ट टू w2 इज कॉल्ड d2 से, एंड विद रिस्पेक्ट टू w16 इज d16 से, राइट? अब आपको क्या करना है? आपको w's और d's का मल्टीपल निकालना है, राइट? ओनली मल्टीपल। अब आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं निकालना, सिर्फ मल्टीपल निकालना है, ठीक है? आप w को भी एक np अरे के तौर पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं जिसमें 16 वैल्यूज हैं, और इनके डेरिवेटिव्स को भी डॉट प्रोडक्ट के तौर पर निकाल लेते हैं जिनमें 16 वैल्यूज हैं, राइट? डेरिवेटिव किसी भी चीज का अल्टीमेटली एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इफ यू रिमेंबर तो लास्ट टाइम जब हमने डेरिवेटिव को डिस्कस किया था तो वी सॉ कि फॉर एग्जांपल इन दिस सिचुएशन राइज ओवर रन की मदद से हमें डेरिवेटिव की वैल्यू क्या मिलेगी, व्हिच वाज 2 इन दैट केस, राइट? सो हमने इन तमाम को न्यूमेरिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है? अब आप क्या कर सकते हैं? यू से wj इज इक्वल टू wj माइनस लर्निंग रेट। लर्निंग रेट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फर्स्ट करें हमने यहाँ पे 0.1 रखी हुई है, लर्निंग रेट टाइम्स dj, राइट? आपने हर वेट को अपडेट करना है, कैसे? उस वेट की पुरानी वैल्यू में से उसके डेरिवेटिव को, लॉस फंक्शन के डेरिवेटिव को माइनस करके। अब यहां हम देखते हैं अगर हम इसको विदाउट फैक्टराइजेशन करें तो कैसे करेंगे? वी विल से w1 इज इक्वल टू w1 माइनस 0.1 इनटू d1, w2 इज इक्वल टू w2 माइनस 0.1 इनटू d2, एंड w16 इज इक्वल टू w16 माइनस 0.1 इनटू d16, राइट? और आप इसको लूप लगा के इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? आपका वेक्टर सारा पॉपुलेट हो जाएगा। बट अगेन दिस इज सीक्वेंशियल, वन बाय वन। यही चीज अगर हम numpy की मदद से करें या वेक्टराइज्ड अंदाज में करें, ठीक है? अगर हम इसको numpy array में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर ये वेक्टराइज्ड अंदाज के अंदर ही होगी क्योंकि numpy array के अंदर है, राइट? ये क्या करेगा? It will simply say w is equal to w minus learning rate times d. Now what is w and what is d? w is this array and d is this array. अब आपने सिर्फ एक लाइन लिखी है, राइट? इस लाइन में w और d की डायमेंशंस बराबर हैं, w's और d's की डायमेंशन बराबर हैं। अब आपने यहाँ इंडेक्सेस का इस्तेमाल नहीं किया, आपने नहीं लिखा w1, w2, w3, w16, लेकिन ऑटोमेटिकली numpy इसको रिस्पेक्टिव अंदाज के अंदर कैलकुलेट कर देगी आपको। It will say ओके, w1 में से 0.1 टाइम्स d1 निकालें और w1 को दे दें, w2 में से 0.1 टाइम्स इंटू d2 निकालें और उसको w2 को दे दें,
और W15 में से 0.1 टाइम्स D15 निकालने और उसे W15 को दे दें. You have written just one line, right? अब हम इसे ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं, right? So like you have just written one statement and that has lot of information in it. So it is automatically broadcasting the effect to everything. Plus अब आप देखें, आपने कहा कि D को मल्टीप्लाई करना है 0.1 से. अब D एक पूरा अरे है, 0.1 तो सिर्फ एक वैल्यू है. NumPy क्या करेगी? पूरे अरे की हर वैल्यू को 0.1 से मल्टीप्लाई करेगी. So that broadcasting will happen, right? अब यहाँ NumPy आपको जो एडवांटेज दे रही है अगेन वो क्या है कि जो सारे ऑपरेशंस हैं वो पैरेलल में हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे उसने ये W वेक्टर लिया, ये 0.1 टाइम्स D लिया, उसने कहा जी एक प्रोसेसर ये काम कर दे, दूसरा ये कर दे, तीसरा ये कर दे, चौथा ये कर दे, and so on so forth. So it will be able to do it in parallel if parallel hardware is available on your machine, and that will make it extremely fast given that you have good big computations to do, right? अब जहां आपको ये एडवांटेज होता है NumPy से कि आपको वेक्टराइजेशन और स्पीड अप मिलता है, वहीं पे थोड़ी एब्स्ट्रैक्शन भी आती है, and that abstraction can cause a bit of difficulty for you, right? For example, to be able to realize that okay, you're just multiplying a number with a whole array. Will it multiply with the first number only, or will it multiply with a whole array or word, right? So this is the thing that you only understand once you start to play with it. Without that, it remains abstract. An abstraction where it is an advantage, it also haunts. Okay, next we talk about gradient descent for multiple regression. Again, the concept of the gradient descent will not change. It will remain the same gradient descent that we have talked about already. The only thing is that more variables will get added to it, and optimization will be based on more variables. And as we were just talking about it, कि जब तक तो आप 2 dimensions में होते हैं, visualizations बहुत आसान होती हैं, आप चीज़ों को visually देख सकते हैं. देखिए, visually जब हम चीज़ों को देखते हैं तो visually वो compute नहीं हो रही होती. Computers के लिए visuals matter नहीं करते, visuals हमारे लिए होते हैं, right? So for example, I deal with like some learning communities online, and sometimes I ask those students that what kind of learner you are, right? So like different people are different kind of learners. Some people are good listeners, some people are just independent learners, some people are good at collaborating, right? And many of them answer that we are good at learning from visuals. हमारे लिए visuals से learn करना ज़्यादा आसान होता है, right? Yeah, we learn from text as well, but if we get good visuals, that makes it a lot easy for us to learn. So that is what visual is doing for you. Generally, it is perceived that humans learn quite easily from visuals rather than numbers and text, right? That's why we do so much to create visuals, so that it is more like, आप क्रिकेट भी देखें तो आपको विजुअल्स उसमें मिलते हैं. So वो विजुअल्स आपको बेसिकली चीज़ों को easily readable और understandable बनाने के लिए बनाए गए होते हैं. But once we go to like higher dimensions, visualizations are not possible the way they were possible in 2 dimensions or say in 3 dimensions. Okay, so अब हमारे पास जो previous notation थी जो parameters की, that was like we have parameters w1 to up to wn. We have one parameter fixed as b, right? हमारे पास model जो है वो है this one, right? और cost function अब क्या बन जाएगा accordingly? This one. Is it good so far? ये बातें तो मेरा ख्याल है सबको अज़बर होंगी. Can you give a smile in response to this assumption? Because I said सबको अज़बर होंगी. Some people are bad, they study, but most people are good, they don't. So are you good or bad? How many of you are bad?
Okay, how many of you are good? I guess you people are divided on this. I said some people are bad, they study. But most people are good, they don't. So now are you good or bad? I guess most of you should be good. Am I right? Great. Be good. Remain good. If the definition of goodness is changed for the entirety of our life, how good would it be? अभी मैंने पिछली क्लास में पूछा था कि कितने लोगों ने जाके कल इसको रिवाइज किया था, तो यही सवाल आपसे पूछ रहे थे, कितने लोगों ने कल का लेसन जाके एक बार खोल कर देखा था? एक, दो, दो, you two are very bad. Yes, sir. You people are outliers. Okay, so this was our model. अच्छा, अब इसी को हम वेक्टराइज्ड नोटेशन में अगर रिप्रेजेंट करें तो W को यूं वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट कर देंगे, B अभी वैसे का वैसा नंबर ही रहेगा, B में कोई तब्दीली नहीं है, और आपका जो मॉडल है वो बेसिकली आप यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट ले आए। आप कहते हैं कि आप इनको नम पाई को इस्तेमाल करते हुए लाइक वेक्टर्स के तौर पर रिप्रेजेंट करें, नम पाई अरे के अंदर, और इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें, दैट विल बी वेक्टराइज्ड एंड फास्ट, राइट। और आपका कॉस्ट फंक्शन भी जो होगा वो अब ये सारे जो W's हैं वो श्रिंक होके एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएंगे यहाँ, right? You're just going with the vectorized implementation of everything. That's the only thing that we are changing here. Now, accordingly, our gradient descent will be changed, right? Where it was like doing this, that Wj is equal to Wj minus alpha times the derivative of the cost function with respect to Wj, and similarly for B, now it will be saying that Wj is equal to Wj minus alpha times the derivative of the cost function, where the cost function is now having a vectorized version of W. And not a sequence of W's here, separately indicated, right? So the only thing that we have changed from here to here is that we have gone with vectorized implementation of everything. And what is the primary thing that has changed in it? The set of weights, the features, they are represented using vectors. And then once you do like this weight update, the derivatives also like use the same notation here, and ultimately the vectorized implementation makes it way more efficient for you to do these calculations than using the non-vectorized implementation. ये कहाँ से आ गया यार? Right? Okay. So now if you remember, we talked about the derivative of the cost function previously. We talked about the derivative of the cost function previously. कि basically जब हम कहते हैं that W is equal to W minus alpha times the derivative of the cost function with respect to W. So like that's the thing that comes to our like side, right? So अब पहले क्या था कि हमारे पास था एक फीचर, ठीक है? So हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव एक हमारे पास यूं आता था, right? So like it's 1 over m like this, and ये स्क्वायर यहाँ से चला जाता है, स्क्वायर रूट के साथ यहाँ से कैंसिल भी हो जाता है, और आपके पास यहाँ xi बचता था, right? एक फीचर, right? तो हम कहते थे कि ये हमारा डेरिवेटिव है कॉस्ट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दैट w, right? और उसके बाद आप b का भी ले लेते थे, आपके पास b का भी डेरिवेटिव होता था, right? So ये वो चीज़ है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी. So this was applicable when once we had only one feature. तो आप w की अपडेट लेते थे और b की अपडेट लेते थे, right? अब एक चीज जो मजीद तब्दील हो जाएगी इसके अंदर ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर वो ये है कि अब आपके पास फीचर एक
नहीं है बल्कि ज़्यादा है। सो अब जितने फीचर्स हैं आपके पास उतने ही W's और डेरिवेटिव्स आएंगे, राइट? सो यू विल गेट फॉर एग्जांपल W1 is equal to W1 into alpha times the derivative of the loss function with respect to W1. अब W1 के साथ X1 रिलेट करता है तो यहाँ X1 होगा। सिमिलरली W2 के साथ X2 रिलेट करेगा तो जब W2 को कंप्यूट करेंगे तो X2 आएगा, और सिमिलरली जब आप Wn को कंप्यूट करेंगे तो Wn के साथ Xn रिलेट करेगा तो यहाँ आपके पास Xn बचेगा, राइट? सो एक फीचर से जब आप निकलेंगे, B की इंप्लीमेंटेशन वही रहेगी, B में कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन पहले चूंकि एक फीचर था तो आपका एक डेरिवेटिव उसी फीचर के एतबार से आता था, इसके साथ सबस्क्रिप्ट नहीं था बिकॉज ये एक ही फीचर था, राइट? अब आप हर सबस्क्रिप्ट W के साथ जो सबस्क्रिप्ट लगा होगा X का भी वही सबस्क्रिप्ट वहां पे इस्तेमाल कर रहे होंगे क्योंकि उस W के रेलेवेंट जो फीचर है वो भी उसी सबस्क्रिप्ट के साथ इंडिकेट किया गया, राइट? The rest of the story is the same. The problem is there is so much here, but the argument I gave looks all right, and you are in 2 mods. Oh, it's so much. We should spend more time over it. But okay, there is also no question. So yeah, maybe we can go forward. So let's go forward. And like remember those simultaneous updates. So you will be computing all the weight updates at once, and then once you have computed it for all, then you will be applying the update, not any intermediate updates. Okay. Now, like that said, like हमने कहा कि gradient descent is the most popular algorithm and outrightly the dominant choice for like all the optimizations that we are doing in machine learning now while learning these parameters. There are other ways to learn the parameters like W's and B's as well. So for example, when I first studied machine learning back in 2014 maybe, 13 or 14 it was, तो उस वक्त gradient descent was not that popular algorithm. इनफैक्ट लाइक डीप लर्निंग की डेवलपमेंट को अगर हम कहें कि कितना वक्त हुआ है तो शायद एक डेकेड कहना काफ़ी होगा। 10 साल के अंदर डीप लर्निंग और ग्रेडियंट डिसेंट खास तौर पे बहुत डेवलप हो गया, लाइक इट चेंज द लैंडस्केप ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, उस वक्त भी मशीन लर्निंग मॉडल्स थे। सो व्हेन आई फर्स्ट स्टडी तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर W's पैरामीटर्स को लर्न करने के लिए, W's एंड B's को लर्न करने के लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। So we had other ways. For example, one algorithm to do that was OLS. It was called ordinary least squares. It can still be used. There is another method that is called like normal equation. हम normal equation का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे इनके बारे में like ये कहा जाता है कि scalable methods नहीं है, और जैसे जैसे आपके डेटा का साइज और फीचर के साइज ग्रो करते हैं scalability उस तरीके से हमें नहीं मिलती। So just to mention that there are other ways to learn these parameters as well, we go with the most dominant choice, that is using gradient descent for that matter. So the main disadvantage is that it doesn't generalize to other learning algorithm. एक problem ये है कि ये linear regression के साथ ही इस्तेमाल होते हैं methods, जबकि gradient descent की एक खासियत ये है कि ये बहुत सारी diverse situations के अंदर, बहुत सारे diverse learning scenarios के अंदर applicable होता है, right? और दूसरी चीज़ ये कि जब आपके पास number of features ज़्यादा हो जाएं तो ये algorithms जैसे हमने अभी mention किए, they do not scale well with that. So gradient descent is pretty good at doing that as well, right? So the only thing that we need to mention was that yes, gradient descent is not the only way to learn these parameters. There are other ways to learn the parameters, but we are very happy sticking to gradient descent only for learning these parameters for the larger benefit of ourselves. And आज के लिए हम